व्हाई डू वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी? क्या इंडिया है कि ग्लोबल है? So India. हाँ, इंडिया है India ना। is व्हाई India. डू वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी? So we calculate performance एक तो तुम materialities अपना in दो order. तीन चीज इंप्रूव करना, वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करना, लैपटॉप से अटेंड करना, प्रोफेशनल अटायर रखना, Yes. ये जूम Hmm. जूम मीटिंग में वॉलपेपर लगा लेना, लिख के रखो ये सब चीज। ये सब चीज के कारण रिजेक्ट करता है लोग, पर्सनैलिटी वो नहीं सर देखता वो तो है। teach करते हैं। हाँ। ठीक है, ठीक है। व्हाई डू वी कैलकुलेट परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी? So we calculate performance materiality in order to check that the uncorrected and undetected misstatement does not exceed the overall materiality level. So we take this in order to check that our materiality level does not exceed. So this is why we check performance materiality. बस इतना ही होगा आंसर। And performance materiality is basically 50 to 75% of the overall materiality level is kept by the auditor, and when material misstatement exceeds this, then the auditor informs the higher management in order to correct the misstatement, uh, so that the books appear to be fairly enough. हाउ विल यू डू द ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? So in case of the fixed assets, what we will do is we will check whatever additions has been made or not, whatever additions has been made, is it correct or not. We will do the physical verification of the fixed assets. We will calculate the depreciation on the fixed assets. We will recalculate it and check it whether it is matching with that of the applied by the management or not. We will check whether the assets title deeds are in the name of the company or not. If not, then we will do the caro reporting. There are certain हाउ विल यू डू द specific ट्रेड requirements. रिसीवेबल्स? So in case of trade receivables, we will take the aging. First, we will obtain the aging report of the trade receivable. Then we will ask for the confirmation from the trade receivables directly. And एक बार so ग्रुप में लिखे ना, आई एम इन मीनाक्षी और सेठ, आप लोग वीडियो ऑन करिए दोनों जन। ठीक है, in case of trade मीनाक्षी है ना, receivables, एक yes. मिनट रुक जाइए, आप भी लिखिए ग्रुप पे आई एम इन, फटाफट। Okay, sir. वीडियो ऑन करिए दोनों आदमी। हर्षित सेठ वीडियो ऑन रखिए, और वीडियो और क्या बोल रहे हैं, ग्रुप पे लिखे आई एम इन, लिख दिया सर. जल्दी जल्दी। हर्षित सेठ, मीनाक्षी राठौर, मीनाक्षी रस्तोगी, जल्दी। ग्रुप में लिखे आई एम इन, मीनाक्षी रस्तोगी एंड हर्षित सेठ। हर्षित सेठ, वीडियो ऑन करिए अपना। वीडियो ऑन करिए आपका। आप लोग वीडियो ऑन रखेगा और इधर उधर से नहीं आएगा, ज्वाइन नहीं करेगा। यहाँ पर टीवी नहीं चल के रखा कि आप कभी भी आ जाएगा। व्हेन यू आर कमिंग ऑन योर वीडियो, यू ओके सर। गेटिंग माय पॉइंट ना? आई होप इट इज ओके क्लियर। सर। ठीक है, ये कोई टीवी नहीं चल के रखा है यहाँ पर में कि आप जब भी आया मौज मस्ती निकल गया, आके निकल गया। आप समझ रहे हैं ना, इस पर कमी कमी सीरियसनेस, हम कुछ भी पूछ लिया तो आपको जवाब देना पड़ेगा यहाँ पर में। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाउ विल यू डू द ऑडिट? और ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, याद रखिएगा, तो आपका बेइज्जती भी हो जाएगा ज्यादा, याद रखिएगा। ठीक है, चीजों को। ठीक है, हाउ विल यू डू द ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हर्षिता? So in case of the fixed assets, we will check whatever new purchases has been made. We will do the physical verification of the same. We will check the title deed whether it is in the name of the company or not. We will check the depreciation calculation which the management has calculated whether it is वीडियो appropriate or ऑफ हो not. गया आपका, वीडियो ऑन We करिए will आपका, recap. हर्षित से वीडियो ऑन रखेंगे। हाँ, आप कब देखेंगे दुकान कैसा है, दुकान में है ना आप, देखिएगा आपका दुकान। वीडियो का उसका दुकानदारी को वो करिए, मतलब वॉलपेपर लगा के। ठीक, सर घर जाके भी तुरंत कर लेते सर, अभी थोड़ा सा दुकान पे हाँ आया हुआ है। हाँ, वही चीज है। दुकान देख रहे हैं आपका कैसा है, आपका खुद का है क्या? क्या, हाँ सर। किसका है हाँ ये? सर, क्या बेचते हैं दुकान में? होलसेल। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं। वीडियो ऑन करिए, उसको वॉलपेपर वगैरह करके वो सीरियस हो के आइए। ठीक है, बोलिए।
हाँ एक हर मिनट। चीज। तो वापस बोल रहे सर, आप सुनिए. हम्म So in case of audit of the fixed asset, we हम्म will check whether the we will do the physical verification of the same. Then we will check whatever purchases we have made, whether it is in the name of the company or not. Title deed we will check. We will check the physical verification of the same. We will check whatever assets has been sold, whether the proper permission for the same has been obtained or not. Then so we will calculate the recalculate the depreciation and check whether it matches with that of the management or not. What is the And journal in entry in the case books of lessee? Journal entry in the in the books of books of lessee. less ROU asset account debit to lease liability. How will you calculate RU asset? RU assets, so it's a component of various things. First thing which include is initial payment which has been made. Then so it is the present value of the further lease liabilities plus the present value of dismantling are the component is ROU asset. Yes, okay, go. ठीक है. और how will you calculate the value of an inventory? How do you audit the value of an inventory? So in case of inventory, what happens is we will check with cost on an NRV, whichever is lower. Now NRV we can check from the subsequent sales register, whatever at what price the sales has been done, we can cross verify it with through, and the inventory is valued in that way. So cost on NRV, whichever is lower. And in case of the raw materials, Tell us if about the tax our audit amendments. Tax audit in case of amendments. tax audit amendments are clause 44, where there is we need to give the breakup of the GST expenditure incurred through the parties on which GST is entitled. That is a proper breakup of the same is provided in clause What is 44. clause And 30? so it's Clause 30. clause 30. So it's there are three sections of it. 30A talks about the so ये तो ध्यान नहीं आ रहा. Clause 26. The clause 26 is talked about 43B, whatever deduction is to be provided. It talks about that the expenditure on which no deduction has been provided in the previous year is carry forward, and still the expenditure has not been incurred. And in the current year itself, whatever deductions has been provided, that detail we need to provide regarding 43B. Index 115, a 5-step model. So India's 115 talks about the revenue recognition, in which first step is we need to identify the contract, then we need to identify the performance obligation, then transaction price, then we need to allocate the transaction price in performance obligation, and then lastly, so we need to recognize the What are revenue. your major observations in the stat audit? So in case of stat audit, that's revenue recognition was one of the major observation I have found. Second, in which cutoff procedures were not followed when the terms were FOB or CIF, but the revenue has been recognized previously itself. These are the things. Secondly, sir, inventory case also cost or NRV should be followed, but most of the cases only cost has been done. NRV has not taken into consideration. These When two do we things, take sir, many NRV? of time. When do we take NRV? So, we take NRV when the cost price is more than that of the selling price in the market. So we take NRV. And NRV becomes less than the cost because of the market changes, because of some technical changes or market external factors. Sometimes NRV becomes less than the cost. Okay. Any other observations? So these two are major observations, sir. So next thing, sir, many of times employee benefit expenses that was shown inflated at an inflated rate, sir, because their ghost employees were there, but whose full and final settlement has been made, but still their payment used to be shown in the register. These things. Kindly clarify this. So in case of we used to check the total numbers. We used to verify that compared to that of the
previous year, whatever you used to audit, number of employees we used to verify, and after that we used to we saw that the full and final settlement of the employees has been done. There was records provided for the same, but in case of the SAP, we used to find the details of the same, name of the uh, uh, yeah, employees were there, sir, payment is made. So हाँ, they बोल said सकता that है कि this ये बोल सकता है wrong पेरोल का booking has खर्चा been done. 300% से इंक्रीज हो रहा था कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। पेरोल का खर्चा इंक्रीज हो रहा था एंड आपका सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा था कंपैरेटिवली। तो सेल्स इंक्रीज नहीं हो रहा था, पेरोल का खर्चा इंक्रीज हो रहा था, ये आप पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, Okay, sir. ये हाँ. सेल्स आप 100% से बढ़ रहा है, पेरोल 300% से बढ़ रहा है। तो पेरोल इतना बढ़ रहा है, आपने इसको पूछा पेरोल का खर्चा इतना क्यों बढ़ रहा है, तो जैसे आपने इसको बोला पेरोल का खर्चा इतना बढ़ रहा है तो 300% हाइक हुआ ना पेरोल में। तो उसको पूछा तो बोला लेबर स्ट्राइक है, वहां बोला डॉक्यूमेंट बताओ, तो लेबर डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया। ये पॉइंट हम लिखवाया Okay, भी sir. है, एक्सेल शीट में सर है वो पॉइंट। बोले कि लेबर स्ट्राइक है। लेबर स्ट्राइक है, बट लेबर स्ट्राइक था नहीं। आपने पता तो टैक्स इवेजन के क्या था, चेक दे के कैश ले रहा था, चेक दे के ओके कैश। सर, ये वाला हम इसमें लिखवाया है, ये सब गो थ्रू करिए तब तो होगा। ये देखिए, ठीक है ये सर। एक्सेल शीट है ना, इसमें सब कुछ लिखवाया है, ये सब पॉइंट वहां पर बोलना है। पीओ स्प्लिट अप, फेक सेल्स, फेक परचेज, रिलेटेड पार्टी परचेज एट अ हायर प्राइस, सेल टू रिलेटेड, पेमेंट विदाउट थ्री वे मैच, सारा पॉइंट्स बोलना है। जितना पॉइंट बोलेगा उतना ज्यादा जल्दी सक्सेसफुल होगा। ओके, आप हमको पूर्वी का 10 मिनट दीजिएगा, आप भी सुन लीजिए, ठीक है, इनका हम ले लेते हैं पहले। ठीक है, या सर, या सर। तो रेवेन्यू का कट ऑफ कैसे करेंगे, आपका भी आएगा शॉर्ट लिस्टिंग में तो काम आएगा डेफिनेटली। रेवेन्यू का कट ऑफ कैसे करेंगे अर्षिता? हेलो। हाँ बोलिए, रेवेन्यू का कट हेलो। ऑफ कैसे होगा? In case of revenue, sir, we will take the invoice pertaining to the last period of the March and the starting period pertaining to the April, in order to check whether the FOB or CI, whatever terms it is, whether it has been fulfilled or not, and the performance obligation is satisfied after that revenue is booked or previously it has booked. For that purpose, we will take the last invoices, around 10 to 15 invoices in the month of the March pertaining to the last period, and in April starting period we will take, in order to check the revenue has been booked properly or not, revenue booked pertain to that particular period or not. What are the things that you will check in revenue cut off? Last how many transactions you will check? 10 to 15, sir. What is that? Invoice. Invoices we will check for last 10 to 15, and Invoice. What are the supporting bills corresponding also. documents you will check? What are the corresponding Sir, documents you will check? transportation bill, e-way bill, all these हाँ, things we will check, sir. हाँ बोलिए, Or हाँ we will very good. check whether the payment has been received for the same or not. We will check bank statement even, sir. Right. Question will be asked. What is control testing? So control testing, these are the procedures which the company has been implemented in order to check whether the procedures implemented by the company is operating properly or not. What is assertions of P&L? So assertions are actually the representations made by the management which are embodied in the financial statement. Assertions of P&L. Profit and loss assertions include completeness, classification, cutoff procedures, accuracy, and completeness, classification, OCACC. Occurrence, completeness, accuracy, classification, completeness, cutoff. classification. OCACC. OCACC. That's all. How will you do the audit of payroll? So in case of payroll, we will obtain the attendance register and the payroll register we will take, and we will try to check that the whatever booking has been done in the payroll register is proper or not. We will tally the total number of employees, that were opening number of employees, whatever new has been added, new employees would have been added. So we will check their documents, KYC documents, their increment and all, whatever terms are there, we will check that. And in case of the employees who are leaving, we will check the full and final settlement of them. And in this way, so we will be doing the audit. We will compare with that of the whatever the What is the whatever difference the between India's salary has been 115 and the earlier years? Difference between 115 and the earlier years. in case of 115, sir, it is basically based on the performance obligation, and previously it was based on the transfer of the risk and reward. In India's 115, there is a particular bifurcation has been provided regarding each and everything, how the booking should be done. अब तो Whereas in परफॉर्मेंस case of the ऑब्लिगेशन previous, कंट्रोल ट्रांसफर बोलिएगा,
कंट्रोल ट्रांसफर पहले रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता था, ठीक है। अच्छा, इसमें कंट्रोल ट्रांसफर हो रहा रिस्क एंड रिवॉर्ड है। ट्रांसफर और परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बोलती Proper थी, वो भी proper ठीक है। bifurcation of each and everything has been done, whereas in that case only when the goods or services is provided, then What only is we the will be audit doing the. amendments in the audit report? So two major amendments have been done. That is one in case of the dividend payment, whether the dividend is paid, declared and paid as per the terms or not, and What is UM and so paragraph? UM paragraph. emphasis on matter paragraph. So this is the paragraph which in the auditor judgment were most important to the audit of the financial statement, which has been properly disclosed and in the financial statement by the management. Example. So emphasis on matter paragraph, we can say any contingency, any catastrophic event has occurred, which has been properly disclosed by Other the matter management. paragraph. So other matter paragraph are those paragraph which has not been disclosed, which has not been part of the financial statement, but auditor think is important for Example. users to understand it properly. Example, we can say Example. that a branch auditor and main auditor are two different auditors. इसका ऑडिट हमने नहीं किया, कोई और ऑडिटर किया है, द क्लाइंट Why sir? पार्ट ऑफ द Branch auditor ऑडिटर। and हाँ, की ऑडिट मैटर। key audit matters are those matters which in the auditor's professional judgment were most important to the audit of the financial statement. It is necessary for the listed clients to disclose, and so it includes matters which has been discussed to the TCWG, and amongst them the auditor पूर्वी का आप used to हमको show नोट्स मेल करेगा, जो आप बनाया है ना, पूर्वी का नोट्स मेल हाँ? करिएगा, ठीक है। बनाया क्या कुछ चीज का नोट्स तो मेल करिएगा, पूर्वी का हमको बोल रहे थे नोट्स, पूर्विका को बोल रहे हैं, नोट्स बनाए हैं ना, मेल करिएगा मेरे को, उससे पूछूंगा मैं। okay, so मेल वो करिएगा, in ठीक है। which is disclosed to the TCWG, those matters to be disclosed. Examples includes the contingencies, any change in the tax changes, or any impairment provisions related things. All Okay. these are disclosed. How do you check the going concern, non-financial parameters of a going concern? So in case of non-going concern, sir, if the company is not able to pay it creditors, creditors has stopped the payment and has shifted to the cash basis, net operating loss is there, sir. Mm, or so these are the financial ratios are adverse, then so it's impact on the going concern. Okay. ये कितना दिन नहीं दिखाई दे रहे थे ना, हाँ इतना देर दिखाई दे रहे थे हम, हाँ सर। ठीक रहते क्या? हमको नहीं दिख रहा था खुद का, लेकिन जूम में क्या क्या नया नया फीचर्स निकाल दिया। नहीं दिख रहा ठीक है है, सर, दिख रहा है। पहले भी दिख रहे थे क्या, पता नहीं, हम सो व्यू करके रखे थे ना। नहीं ठीक, शुरू से दिख रहा है सर। हमको खुद को नहीं दिखाई दे रहा था, ये नए नए चीज फीचर है, ठीक है। इंडिया 115 कंट्रोल ट्रांसफर ओवर पीरियड ऑफ टाइम का कंडीशंस क्या क्या है? So control transfer over the period of time, three conditions are there. First thing, the asset which has been created has no other alternatives. The asset which is created is on the property of the owner itself. And the third, it's a when the asset created, the What is benefit is info term? consumed simultaneously by the client. Info terms. The Incoterms are the terms which is provided in terms of the transportation. That is, we can say CIF basis, FOB basis, How FOR do you do basis, the revenue whatever. recognition in case of CIF? So in case of CIF basis, we will recognize the revenue when the goods has been reached at the place of the client itself. This we can check through the transportation bill or e-way bill, and after that we will be recording it. नॉलेज ठीक है आपका, और देख रहा हूँ मैं और कुछ इसमें क्या पूछ सकता हूँ। हाउ डू यू परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स? So analytical procedures are basically procedures concerned with the variance analysis and ratio analysis. So we would be performing variance analysis, that's comparing the current year figures with that of the previous year in order to check the variances, and ratio analysis is one also tool. In this way, I'll be performing the analytical procedures. गुड। कितना घंटा पढ़ा आपने? सर हम तो आप इतना दिन से तो आप बोल रहे थे तो पढ़ ही रहते हैं। हाँ, बहुत दिन से पढ़ रहे हो, कोई बात है। शुरू तो है आप। वो तो Why the company create DTA and DTL?
So DTL is created because it gives the true picture of the company. Whatever asset, whatever this shows that, so it shows the consistency actually. That the this is the liability or the asset which the company has, and What is deferred which tax is asset? not. So deferred tax assets are when in case of, so deferred इजी tax क्वेश्चन assets. है। हाँ सर हम बता रहे हैं. When there is a temporary difference, then percentage of it is created, is called deferred tax टेम्परेरी asset. डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड बुक इनकम जो था ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अकाउंटिंग हाँ हाँ इनकम, सर. के बीच में जो, हाँ. एंड इनकम एज पर द इनकम टैक्स रिटर्न, दोनों के बीच में जो भी एग्जांपल। So deferred tax asset, so क्या asset होगा? अच्छा क्वेश्चन है ये, लिख लीजिए ये, So ये लिख थोड़ा लीजिए देखना होगा सर. परफेक्ट हाँ. करके, ये देखिएगा सेक्शन 43B अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, सेक्शन 43B प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन से डीटीएल क्रिएट होता है, ठीक है। ये हो गया। 43B में म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट बेसिस में होगा ये। शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स आता है, हमको लग रहा है आपको, ये हम नहीं पूछ रहे आपको। और क्या है, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज पर द AS9 इन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड? So AS9 का तो याद थोड़ी ना है कि वो भी देखना होगा क्या? AS9 नहीं होगा ये, शायद हमको लगता है इंडेक्स 115 होगा ये, दीवान पीछे बड़ा पूछा था। हाँ तो परसेंटेज ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन बेसिस मेथड। पे. परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड में रेवेन्यू परसेंटेज कैसे ऑफ होगा, कंप्लीशन मेथड. ठीक है। सर टू टाइप्स ऑफ होता है, एक आउटपुट मेथड होता है, एक टू इनपुट मेथड होता है. मेथड तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी बोल ही दिया, एनालिटिकल बोल दिया। कारो एप्लीकेबिलिटी, कारो कब एप्लीकेबल होता है? So Caro is applicable on company, including foreign company other than insurance company, banking company, private company or small company. ठीक है, और तो कारो का न्यू क्लॉजेज है, बता ही दिए, कारो का क्लॉजेज आता ही है आपको ना, कारो शेड्यूल 3 अमेंडमेंट Caro आता है। schedule 3 अच्छे से आता है सर. बात ही है। अब फ्रॉड्स अच्छा से पढ़ना है थोड़ा, फ्रॉड जो होता है ना, हम्म. फ्रॉड्स अच्छा से पढ़ना है। ओवर कैपिटलाइजेशन, ये पेमेंट विदाउट 3 वे मैच, PR इज नॉट अप्रूव्ड, ये जो अर्ग है ना, ये अच्छा से पढ़ना है। पेरोल का एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गया सिग्निफिकेंटली, 300% इंक्रीज इन पेरोल, जो बोला था ना, सेल Okay. आपका इतना इंक्रीज है, पेरोल इंक्रीज हो गया, परचेज इंक्रीज हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, फेक परचेज, फेक सेल, कोटेशंस मिल गया, कोटेशंस तो वाला, ये ये सब जो फ्रॉड्स आपका हम बोलेंगे ना, फ्रॉड्स अच्छा से फ्रॉड्स पढ़िएगा, के बारे फ्रॉड, में. फ्रॉड्स अच्छा से ठीक है. पढ़िएगा। और दूसरा टैक्स ऑडिट अमेंडमेंट्स, फ्रॉड्स टैक्स ऑडिट अमेंडमेंट लिखते जाइए, फ्रॉड्स टैक्स ऑडिट अमेंडमेंट्स, और फ्रॉड्स टैक्स ऑडिट अमेंडमेंट्स। फिर मेरे हिसाब से आपका कटऑफ वगैरह मेरे हिसाब एरिया आपका वही है, फ्रॉड्स एंड टैक्स ऑडिट अमेंडमेंट्स। थोड़ा बस इंडेस 115, 116, 109, 115, 116, 109, और डेफर टैक्स ऐसे तो ही गया मोटा मोटी। 109 में आपको ECL पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का जर्नल एंट्री। Okay. एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का क्या वर्किंग्स होता है, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस क्यों कैलकुलेट होता है, इंडिया सेक्शन हो। फिर FBTPL, OCI, अमोर्टाइज कॉस्ट, वो हुआ है आपका अच्छा से। हाँ सर ये करा हुआ है. ये पूछेगा आपको, ये अच्छा से करिए। क्या कब होगा FBTPL, कब लगेगा? So FBTPL, when there is no such, सर एक बार देखना होगा, भूल गया. यहाँ पर जब बिजनेस मॉडल इज टू कुछ था, डेरिवेटिव्स में लगता है आपका। और OCI कब हाँ लगता है, डेरिवेटिव. एंड अमोर्टाइज कॉस्ट कब लगता है? जब प्रिंसिपल इंटरेस्ट लेना है तब अमोर्टाइज कॉस्ट लगता है। जब हेल्ड टू हाँ बता रहे मेच्योरिटी सर, होने से, हाँ, अमोर्टाइज तब हेल्ड लेते फॉर हैं ट्रेडिंग में जब लगता है फिक्स FBTPL। पेमेंट लेना है. हाँ, हाँ, फिक्स टर्म रहता है और फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है तब अमोर्टाइज लगता है. और इंटेंशन टू सेल इन द फ्यूचर सर. और आपका हाँ, OCI तब लगता है जब आपका इंटेंशन इज नॉट फिक्स्ड, बट बस आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट और वेरी गुड। फिक्स्ड मेच्योरिटी रहता है. और ये वाला FBTPL याद में रखना, नॉर्मली इसमें एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कब होगा? इसमें 12 मंथ का ECL होता है, 6 मंथ का ECL होता है। 12 मंथ का होता है, लाइफ 12 टाइम मंथ का ECL होता है, होता है। लाइफ टाइम रहता है. हाँ, लाइफ कब टाइम कब इज लगेगा? क्रिएटेड. हाँ, एम्बेडेड लाइफ टाइम इज डेरिवेटिव, क्रिएटेड. इम्बेडेड सर एम्बेडेड डेरिवेटिव, आप डेरिवेटिव दो व्हाट साइड इज दिस? तीन चीज हम बता रहे हैं आप, एक तो इंडियस का सीट, एक फ्रॉड वाला सीट, और ज्यादा हाँ. करके टैक्स ऑडिट का अमेंडमेंट। टैक्स ऑडिट, हम्म. टैक्स ऑडिट और फ्रॉड्स, और इंडेस, इंडेस का मेरा जो सीट है वो पूरा एक्सेल सीट हम्म. वो। और इंडेस आपको 115, 116, 109, 100, ये जो ना आपका कौन सा डेफर्ड टैक्स एसेट, बस ये वर्चुअल सर्टेनिटी पूछ सकता है।
कि अभी प्रॉफिट, अभी लॉस है, फ्यूचर में भी लॉस है तो नहीं होगा कुछ भी, डिफिकल्टी है। अभी लॉस है, फ्यूचर में प्रॉफिट होने का चांसेस है, तब डीटीए क्रिएट होता है। वर्चुअल सर्टेन है कि प्रॉफिट होगा, तब आपका डीटीए क्रिएट होता है। तो ये पूछता है वो लोग कि वर्चुअल सर्टेनिटी क्या होता है, ये आपको अच्छा से बताना है वहां पर में। बस और कोई आपका पर्सनल क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड सैलरी, मार्केट रेट, वही बोल रहे हैं, यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, व्हाट इज योर लर्निंग एक्सपीरियंस, ये सबका कॉमन ही होता है। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ में क्या बोलेंगे? Hello, sir. My name is Arshita Mishra. I basically belong गुड from मॉर्निंग Asansol, सर। West Bengal. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, हाँ, sir. Uh, my name is देख Arshita लीजिएगा, गुड Mishra. मॉर्निंग Basically, आफ्टरनून जो भी होगा आपका। हाँ हाँ। I basically उसके बाद belong from Asansol, West Bengal. So I have done my schooling from Dairy Model School, Durgapur. After my schooling, I shifted to Kolkata for graduation and CA preparation. I ना have मत done my बताइएगा article. कि आप शिफ्टेड टू कोलकाता, ये सब चीज बताने का दरकार नहीं है, सीधे पॉइंट में आइएगा। आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड देन आई हैव डन आर्टिकल्स, और उसके बाद I have done my articleship from a mid-sized firm in Kolkata, Kothari and Company, where I got exposure of stat audit, internal audit, GST related work, and income tax related work. My mainly after बोलिए। हेलो सर। आपका सर बोल आवाज नहीं दिया आ ना। रहा, हम सुना ही नहीं आपका, नेटवर्क इशू था, बोलिए। अच्छा सर हम कहाँ थे? आपको बोल देते, आपको क्या बोलना है, आपको आर्टिकल ही बोल दिया, आप बोलेगा प्राइमरीली इन स्टेट ऑडिट, इन द स्टेट ऑडिट आई हैव हाँ डन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ऑडिट ऑफ फिक्स्ड एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, जैसे बोलेगा उससे सवाल पूछने लग जाएगा। वर्क थ्रू टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल एनालिटिकल प्रोसीजर, एक बार आ जाइएगा मीटिंग में, ठीक करके फिर इनके पूर्विका से हम लोग कर लेगा, ठीक है? सेम मीटिंग लिंक में एक बार आ जाइए, सेम लिंक में। हाँ।